Time to greet you. Assalamu alaikum and afternoon, all the beloved viewers of JK Sports Time. We're back with the chase of all-important grand finale unfolding here at the center of Kamarwari. Once again outside the off stump and umpire signals it's a wide. They're up the mark with that extra run. They won for none in over number 1. You can send in the digital token of love via stars. We are eagerly waiting for your stars. Wrapped him on the pad. Shot for LBW, but umpire says it was clearly going down the leg side. No harm done. Score man's 1. And in the meantime, both the batters, I think they fetched one more run in the form of leg buys. They're 2 for none in over number 1. As so far 3 deliveries gone down, 2 of the 1 in the form of extras, other one in the form of leg buys. To be precise, both came in the form of extras. 2 for none. We are in over number 1 of the match. After 3 balls, it's 2 for the loss of no wicket. Chasing 169. Now they need 167 of 117 balls. Imaad Tigers are bowling against the Friends 11 Parimpora. In the meantime, bowler goes and bowls. That's been lofted. Sent straight back past the bowler into the long offence for 4. Starts off with the boundary. That is a terrific shot. Width given and batsman stands tall up the back foot and punched straight down the ground. 1 bounce into the longer boundary for 4. 6 for none. We are in over number 1. 163. They are still behind. That's in the air. Will this go all the way? No, it doesn't. 1 bounce after a couple of bounces. Going down towards extra cover boundary. Fielding in pursuit of the ball. He manages to get to the ball in time. Send us in the return. Both the batters fetch. Both the batters fetch 2. Score moves to 8 for the loss of no wicket after 5 balls. Adil Rishi comes across. The seasonal companion of their side, giving pep talk to the bowler. Adil Kachru right behind the stumps. There is a slip in place, then followed by back with a point, cover point. There is another fielder right in the offside, then followed by short extra cover and mid off. On the onside there is long on in place and one at the mid wicket and the other one is at back with square leg. Thank you Abdul Bari Wani and Aroof Hussain. In the meantime, bowler goes, this time punched it. Fielder gives the chase. Will he get to the ball? No, doesn't. Ball goes into the corner for 4. That ends the over on a high. 12 for none after the completion of over number 1. That was a superb shot. Campus back and pulling that one authoritatively down to the boundary for 4. Over comes to an end. 12 for the loss of no wicket. Riaz out in the middle alongside Tawfiq. Tawfiq goes to 10 of 3 balls and Riaz yet to open his account. He has faced 2 bowlers so far. Abdul Bari, Roof Hussain and Mir Faizan are watching this live broadcast which is being brought to you in collaboration with Anthem Supports India, Fashion Vista, Shining Star Pampur, Arco Fenestration and Nasser Sports Smart. Gulzar Ahmed, Sahil Sajjad and Pare Mudassir Riyaz Shah are watching this live broadcast. He scored just 29 or 27 vital runs for his side but is unable to get going. He was looking off colour straight away but he tried to stay patient and calm out in the middle, but that wasn't enough for his side. Imam Malik, Dar Zaid and others are the part of live broadcast. 12 for none as we are in over number 2 of the match. It's going to be Nara will be bowling from comb box end. On strike it is Riaz waiting for the bowler and is designing and manipulating the field on either side of the track. Field set for Riaz. Abdul Majid Malla, Kasana Muzaffar, his left arm pacer, and Mir Faizan, Kasana Muzaffar. Thank you. 12 for none after the completion of over number 1. Thank you Razakir. As left arm pacer goes and bows the very first ball. It's in the air. Will this be taken? No, it doesn't. There is no fielder at all. That goes into the backward scalar boundary for 4. That was lifted up in the air and ballooning up in the air for a while. He thought that man might get underneath that one, but the ball flies in the air, goes down towards the backward scalar boundary for 4. 16 for the loss of no wicket as we're in over number 2. Mudassir, Sajjad Ahmed and Uwais Khan are watching. He's talking about the WPL. I think they would, Sultan Warriors might have won that one. They were 9 down at that time when we thought out and when we updated you guys with JK Sports Time in inning number 1. It is not a left arm. Thank you. West Khan goes and bows. That's a good ball. Lot better line on that occasion and batsman goes right behind the line of the ball, offering the bat face down and out towards the short cover. No run there. 16 for none. We are in over number 2 of the match. This is Friends 11 Parimpora chasing 169.
Sultan Warriors won the match with ease. Nisar Ahmed is watching. That's played back to the ball, just over the head of the umpire. It goes into the straight hit area for 4. What a shot! And another boundary. Score moves to 20. They're up to fly. They got the start they would have wanted. They're up to fly, and this is the way you would definitely love to get underway. नदीम कुफवाड़ा से आदिल अहमद मैच का आनंद ले रहे हैं, जबकि मुज़ा बने हुए हैं गबरू के साथ। मीर इश्तियाक भी फिर से ड्राइव किया गया, बेहतरीन स्ट्रोक मिड ऑफ पे मिसफील्ड गौहर लेगी से गेंद उस ओर जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। खिलाड़ी गेंद के पीछे उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 2 रन खाते में इन 2 रनों की बदौलत 22 हुआ टीम का स्कोर। बिना किसी विकेट के नुकसान पर काफी कुछ निर्भर करेगा गौहर लेगी पर। Well, 22 for the loss of no wicket. We are in over number 2 of the match. 1.4 deliveries sent down. They conceded 22 so far. 147. They are still behind what they want and what they need at the moment. That's a good ball. Lord batter once again. Lord batter. And batsman manages to keep that one down and out towards the offside in front of scare. There won't be any run. 22 for none. We are in over number 2 of the match. 1.4 balls done and dusted. 22 for the loss of no wicket. Thank you Igor Estignadu, Irfan Pare and Umar Nazir. Javed Magre, Izhar Farouk and Dar Manzoor are watching. Another dot delivery. Imtiaz Naiku he wants to listen Urdu vibes. 22 for the loss of no wicket after 2 done. 22 for none, chasing 169 from Derelati 20 overs with 10 wickets in hand. Well, this is just the beginning. We can't say anything until the last ball is not bowled. 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। राही फिरदौस, मीर लतीफ, दानिश लोन मैच का आनंद ले रहे हैं। एजाज गेंदबाजी करने की तैयारी में। एजाज कुल मिलाकर वो अपना दूसरा ओवर करने जा रहे हैं। पारी का ये तीसरा ओवर होगा। बढ़िया गेंद और काफी तेजी के साथ ये गेंद की थी। गति में मिश्रण किया, इससे पहले कुछ कम रफ्तार से उन्होंने वो पहला ओवर किया था। एजाज की अगली गेंद फिर से तेज गेंद पर उससे बेहतर स्ट्रोक। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। क्या दिलकश स्ट्रोक था तौसीफ का। मिडल ऑफ स्टंप के आसपास घुटना जमीन के साथ टेका, गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑन पे तैनात खिलाड़ी आदिल ज़हूर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन छक्के के साथ 6 रन खाते में। टीम का स्कोर अब 28 हो गया है। बिना किसी विकेट के नुकसान पर तौसीफ रंग में नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे हैं रियाज। फिर से उसी दिशा में खेला गया स्ट्रोक, थोड़ा वाइडिश की ओर। वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात थे, सुकर लगाया गया था और 2 खिलाड़ियों के दरमियान से वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर में 4 रनों का 6 रनों का और इजाफा। टीम का स्कोर, हालांकि 4 रन आए हैं खाते में, टीम का स्कोर अब 32 हो गया है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इरफान परे, वालेकुम अस्सलाम, इरफान परे बने हुए हैं एंडलेस पेन के साथ। मीर इरफान, कसाना मुजफ्फर, कैसर अशरफ। इस चौके की बदौलत 32वां टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच आपके लिए हाजिर है। आप घर बैठे लुत्फानंदोज हो रहे हैं इस लाइव कवरेज से। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपोर, नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा, आर्को फैन स्टेशन, जिनके सहयोग से, ताउन से आप घर बैठे इस मैच का आनंद ले रहे हो। एजाज की अगली गेंद फिर से लॉफ्टेड स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। लगातार ये खर्चीला ओवर जा रहा है। 16 रन आए हैं अब तक इस ओवर में। 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर की और 38वां टीम का स्कोर 32 से बढ़कर। ये दिल का स्ट्रोक था तौसीफ का और तौसीफ अगर चल पड़े उन्हें रोकना तो मुश्किल होगा। तौसीफ ने अब तक 26 बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। मुनव्वर भाई, Smoked down the ground for 6. It is raining 6s and 4s here at the centre. In the meantime, Ijaz goes, and that's another biggie. That's gone a country mile, many a mile, all the way for 6 over the long on boundary. What a shot! Terrific batting, and that is completely unleashed here at the centre. Power unleashing. 44 for none after 2.5 balls. क्या ये इस मैच का सबसे बड़ा छक्का था? हालांकि इससे पहले ग्रैंड कश्मीर प्रीमियर लीग जो यहाँ इवेंट हुआ था 2019-20 की मैं बात कर रहा हूँ, तब से लेकर अब तक जो भी लाइव मैच मैंने यहाँ किए हैं
और सीधे बल्ले से खेला गया, इतना बड़ा स्ट्रोक मैंने नहीं देखा। मस्जिद जो यहाँ है अंजुम मस्जिद, उसकी छत पर गेंद गिरी और वहां से दूर उस ओर चली गई और गेंद को वापस लाने में समय तो जरूर लगेगा। Well, someone was talking about the Haram Scaram first day at Lord's, the Mecca of cricket. But this match is worth to watch and worth to cover. And we'd like to welcome all the beloved viewers this afternoon joining JK Sports Time. You can send us your digital token of love, coupon of love via digital stars. You may click on the star option and send us the stars. We'll definitely include your name in the live broadcast. That biggie, monstrous, many a mile shot, gone for runs, 6 of those. That was a wonderful shot. Believe me, we have been witnessing some firecrackers, fireworks of the bat of the two batters. Amin Rai is watching, thank you. Irshad Tak and Sunil Dutt is watching. All the beloved viewers, thank you for your love in sport. Exactly, Amin Rai. Myself, Munawar Tanveer, 44 for none after 2.5 balls. Pressure on Imaad Tigers right now. Their captain is in desperate need of a wicket here. A wicket here. A follow. 8 गेंदों पर 32 रन यहाँ तौसीफ ने बनाए। जो शुरुआत चाहिए थी टीम को वो शुरुआत मिलती हुई। न्यूजीलैंड 236, 4 झटके लगे और न्यूजीलैंड लीड बाय 227। कल का अपडेट है जब स्टंप्स हुए थे दूसरे दिन के, जब खेल समाप्त हुआ था दूसरे दिन का। और यहाँ ये कहना भी मैं बेहतर समझता हूँ, 40 वर्ष के खिलाड़ी हैं एंडरसन और हर मैच के साथ साथ खतरनाक होते जा रहे हैं। वो जो हम कहते हैं ना कश्मीरी में, you know घास कर टिकर प्रून गुहिम, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल वही काम कर रहे हैं एंडरसन। No doubt about that. Exactly, I'm from that place. That was a wonderful struck of the back foot. Well, we were talking about the Haram Scaram day 1, but followed by a wonderful day, dominating Black Caps all the way. And yesterday belongs to Black Caps, and here it belongs to the front 11 Parimpora. They are 44 for none after 2.5 balls. Salim, Shayan Shahad and Anzar Peer, Haris Irshad and Shayan Shahjar is watching alongside Irfan Pare. और इरफान परे मैच का आनंद ले रहे हैं शयान शहजार के साथ। हारिस इरशाद मलिक भी बने हुए हैं और दानिश अमीन मैच का आनंद ले रहे हैं। गेंद को फिर से अब वापस लाया गया, मैच शुरू होने को है और जिस गति के साथ रन बना रहे हैं तौसीफ, 4-5 ओवर तक वो क्रीज पे रहे तो इमाद टाइगर्स के लिए वापसी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और ऐसे में एजाज तो चाहेंगे पलटवार करना। जख्मी कर दिया अपने आकर्षक स्ट्रोक से यहाँ गेंदबाज को। क्या जख्मी शेर की तरह वो पलटवार करेंगे या नहीं? एजाज की गेंद इस बार बढ़िया गेंद, कुछ बेहतर लाइन थी, शफल किया, ऑफ साइड की ओर चले गए, ऑन साइड में जगह बनाई, मिड विकेट की ओर गेंद गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में 1 रन का इजाफा, मोहसिन के खाते में 1 रन, मोहसिन के हाथों गेंद फील्ड हुई, तौसीफ के खाते में 1 रन। 3 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 45 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 15 की औसत से रन आ रहे हैं। गौहर लगी को तलब किया गया है, गौहर लगी वो गेंदबाजी करेंगे तौसीफ को। ये मुकाबला अब देखने लायक होगा कि जहां प्रहार करना पसंद करते हैं तौसीफ, ऐसे में गौहर लगी के गेंदबाजी में घुमाव होता है। क्या वो आगे खींचने में सफलता हासिल करेंगे? बल्लेबाज को क्रीज से बाहर निकलने की जो कोशिश होगी गौहर लगी की, क्या उसमें उन्हें सफलता मिलेगी? 2 काम करने हैं, एक तो तौसीफ को क्रीज से बाहर निकलना है, दूसरा फिर उन्हें चकमा देना है और ये देखने लायक होगा क्या यहाँ खर्चीले साबित होंगे या जिस काम के लिए उन्हें तलब किया गया वो काम आदिल ऋषि के लिए वो करके जाएंगे। 45 for none on that occasion. Shuffle across, openers of the leg side and picked up a single. And good delivery, Gawalegi for the first time, the very first ball, right hand money on target, and batsman just manages to stub it leg side-ish and playing it off the bat onto the offside. No run there, 45 for none, 3.1 ball done. Gawa second time goes, and that's magnanimous all the way down to the boundary for 6, straight in another one just over his head and down to the boundary. That's gone many a mile, country mile. इससे पहले जो छक्का लगा था और ये जो छक्का लगा इसने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब कुछ ज़्यादा ऊंचाई थी, कुछ ज़्यादा लंबाई थी इस स्ट्रोक में। हालांकि इससे पहले जो स्ट्रोक लिया था उसमें ऊंचाई ज़्यादा थी, लंबाई इससे कम,
और इस बार उतनी ऊंचाई नहीं मिली पर लंबाई तो ठीक ठाक थी। गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। गौहर लगी, उन्हें यहाँ रोकना होगा तौसीफ को। 51 टीम अर्धशतक पूरा हुआ मात्र 3.2 ओवर की गेंदबाजी में। रियाज पॉल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे 10 रन बनाकर नाबाद 8 गेंदों का सामना किया और तौसीफ ने अब तक अगर देखा जाए शायद 39 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया। क्या इस ओवर में वो अपना शतक पूरा कर पाएंगे या नहीं? गेंदबाज बेबस नजर आ रहे हैं। गौहर लगी, एक जुझारू खिलाड़ी है गौहर, वो चाहेंगे यहाँ वापसी करना। देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी होगी। लेग स्टंप के आसपास अगर गेंद टिप्पा खाकर अंदर की ओर आएगी, मुझे लगता है वो एक रणनीति के तहत आप खामोश रख सकते हो तौसीफ को। इस बार बढ़िया गेंद जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, लेग स्टंप पर पिच होने के बाद गेंद अंदर की ओर आई और तौसीफ को हाथ खोलने का मौका नहीं मिला। 51 for the loss of no wicket after 3.3 overs. 118 is what they required from remaining 99 ball. That's in the air. Doesn't get hold of that one. Fielder trying to come underneath. Doesn't get to the ball in time. Ball landed safely. Both the batters fetch one. His counterpart Paul wanted to push for the second one, but sent back sensibly by his colleague Nora. Just a single there. 52 for the loss of no wicket. We are in over number 4 of the match. 3.4 balls done and dusted. Whether it's leggy or righty, still they have to face the Sam Davis devastation. Adnan and Rabi believes that. 52 for none after 3.4 overs. This is Hot Up City Kamarwadi Ramzan Cricket Tournament coming to you live and exclusively. This is the final match. The most awaited final is unfolding here at the centre. Two big sides and some terrific guys from one side to the other side are locking horns here at the centre. 52 for none. Good ball and equally to the task. Gets right behind the line of the ball. Gentle press of the back foot. Adil Rishi, the fielder, no run there. 52 for the loss of no wicket. We are in over number 4. Last ball coming up goes. And goes. That's a wonderful shot. But straight down to the fielder at short mid off. 1B run. 52 for none after 4 overs. 4 done. Thank you, Mir Mukhtar and G Ishu for your love and sport. 52 for the loss of no wicket. 117 is what they required from remaining 96 balls. पहली गेंद डॉट, उसके बाद छक्का लगा और कुल मिलाकर केवल 7 रन खर्च किए। शानदार वापसी गेंदबाज गौहर लगी के दौरान। इस तरह के 1-2 ओवर आएंगे तो मैच में वापसी होगी। बैकफुट पर नजर आ रही है टीम और आमिर नारा वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब तक देखा जाए आदिल रशी इनिंग की शुरुआत में गेंदबाजी करना पसंद करते हैं पर वो कवर में नजर आ रहे हैं फील्ड सजाते हुए। स्लिप कॉर्नर में जो खिलाड़ी है वो कुछ इशारा कर रहे हैं, गेंदबाज ने उस ओर इशारा किया है। मिड ऑफ के जो खिलाड़ी है उन्होंने भी इशारा किया कवर की ओर। हर खिलाड़ी कप्तान बना हुआ नजर आ रहा है। उनकी कोशिश रहेगी टीम को यहाँ सफलता दिलाए। इस बार स्लोवर रन का इस्तेमाल किया था, पढ़ नहीं पाए तौसीफ। क्रीज छोड़कर बाहर आए थे, इरादा किया था बड़ा स्ट्रोक लेना है पर चूके स्ट्रोक लेने से किस्मत के सहारे ही सही अभी भी नाबाद हैं क्रीज पर। 52 for the loss of no wicket. 4.1 ball done and dusted. Second ball coming up. Left arm pacer. Nara has conceded 10. Still good bowling from his side. 52 for the loss of no wicket. And in the meantime, he's running away from us. Goes and bows. He wanted to clip that one off his hips. Doesn't get hold of that one ball. Ricocheting of the blade. And only as far as silly mid on is concerned, over and they're 52 for the loss of no wicket. Well, interesting will be how they will be batting after the power play. As in the power plays, you got the license of going after the pacers, but apart from power play, you have to bat on. तौसीफ उस शैली के खिलाड़ी है, पावर प्ले हो या ना हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और ये एक ऐसा नाम है, ये चल पड़े उन्हें रोकना मुश्किल होगा, जो मैंने इनिंग की शुरुआत में भी बात कही थी। और ऐसा लग रहा है अब वो उस रास्ते पर रवां दवा हैं जो काम करने के लिए उन्हें भेजा गया। आमिर इस ओवर में अगली बार, इस बार तौसीफ ने उसी दिशा में स्ट्रोक लिया, उस ओर खिलाड़ी है। शानदार कैच आदिल ज़ोहर का और तारीफ करनी होगी आदिल ज़ोहर की। यकीनन एक बेहतरीन कैच के साथ पारी समाप्त हुई तौसीफ की और तौसीफ को ये यकीन नहीं आ रहा है कि किस तरह का कैच लिया यहाँ आदिल ज़ोहर ने। लाजवाब कैच, एक अच्छी पारी समाप्त हुई और एक अच्छे कैच के साथ ये पारी समाप्त हुई। काश उस दिशा में कैमरा होता और ये कैच हम कैच कर पाते कैमरे में। ऐसा तो हुआ नहीं पर यहाँ जो मौजूद दर्शक हैं उन्होंने आनंद लिया इस पारी का। तौसीफ मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं।
आदिल ज़ुहूर का हौसला 7वें आसमान। Well, with all the oohs and ahs and those cheers, applaud cheers for Adil Zuhur, the man there, the man who was going berserk, who was just trying to go after the bowlers, he was marauding the cricket ball, has been sent to packing. What a catch! And there you can see the applaud cheers and claps for this guy. And somebody is talking about ICC ODI rankings. Baba Azam has got rank 1 in ODIs, followed by rank 2. I think it will be in T20s, then followed by can't get this, we'll try to rectify. I think it is followed by Virat Kohli at number 2, then followed by Imam ul Haq at number 3. It is exactly that ODI rankings, but the man who dominated for major part of the years and the days, it was King Kohli. 52 for the loss of 1 after 4.4 overs. As left arm pacer Nara continues to bowl. I was just talking about Lonzubi, this is Munawar Tanveer, and I was just talking about Nara. He has been economical, just conceded 10 and now among the wickets. Partnership broken. 52 for the loss of 1. Wani Himu, Lonzubi and Rahi Manzoor are watching. Walaikum salam to all the beloved viewers of JK Sports Time for your love and sport. 52 for the loss of 1. Now let's see how they will be batting under the serious pressure now, because the pressure is climbing and building up after the fall of that man. एक विकेट मिली, मानो कि मुर्दे में जान फूंकी है इस कैच ने। आदिल ज़ुहूर ने जो कैच लिया, पैड लाइन पे ड्रिफ्ट हुई, लेग स्टंप छोड़ती हुई और यहाँ कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, स्क्वायर लेग बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। Well, the newcomer starts off with the boundary. My colleagues thought out that it drifted off the surface, but that was a good shot, worked away, just putting bat onto that one. Maruf Rasool, Rai Manzoor and others, thank you, that is a wonderful shot, flicked away, supple wrist just came into play, and that's a boundary. 56 for 1 after 4.5 balls. Last ball coming up, he's conceded 14 and picked up a wicket. They still required 113 runs of 91 remaining balls. Goes and those with one slip in place. That's another good shot, flicked away, but this time won't get beyond the field. Phil feels that one with ease, does the mop up in style, sends in the return the 2 batters. Fetch 1, 57 for 1 after 5 overs, chasing 169 from their allotted 20 overs. They are in a good position as of now, 57 for 1, but you never know. This is the game of uncertainties and it can change its course from bad to worse, from worse to worsening, and the cricket is the game which is based on the principle of glorious uncertainties. 57 for 1 after 5 overs. Who will be bowling the 6th over of the innings and last over of the mandatory restrictions. They would definitely love to fetch a few more runs, few more odd runs in this very over. 57 is already, they have been able to put on the board for the loss of 1 at the cost of 1. Fresh over begins. Umar is going to bowl. Umar introduced into the attack, change in the bowling. This is 3rd change in the bowling. May I remind you, all the beloved viewers of JK Sports Time, you can send us the digital token of love. We are sending the stars to JK Sports Time, and this broadcast is brought to you by Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Pampur, Arco Fenestration and Nasser Sports Smart. Manur, Lonzubi, Bilal Ahmed are watching. But Shehnawaz joins the broadcast from Kulgam. Goes and the ball comes charging down the track, shimmies down the track, wanted to launch that one, but doesn't get hold of that one, doesn't get to the pitch of the ball flies over the blade, and wicketkeeper standing way back does well to catch that one with ease. 57 for the loss of 1 after 5.1 ball. फ्रेंड्स मोटर्स नारवल और उनकी जो टीम है उनका फाइनल होगा वहाँ कश्मीर स्ट्राइकर्स के साथ 12 तारीख को। ये अपडेट था, संडे को वो मुकाबला होगा। 12 जून नारबल बड़गाम प्रीमियर लीग का फाइनल, फ्रेंड्स मोटर्स नारबल और कश्मीर स्ट्राइकर्स सोजेट के माबैन। Well, another big match, Super Sunday, and we can say that weekend Dhamaka is coming up your way. And in the meantime, Umar once again crosses umpire and bows. Good delivery, beauty, beaten the batter there. Luckily the ball doesn't found an edge. It was almost about to found an edge. Dot delivery, 57 for 1. सुल्तान वॉरियर्स को जीत मिली 34 रनों से, पंजीपुरा क्रिकेट एकेडमी को हराया। केवल 111 बनाए थे और बदले में 112 रन का जो लक्ष्य मिला था 112 रनों का, उससे टीम दूर रही। केवल
70 के आसपास उन्होंने रन बनाए, शायद 74 रन। और अब 34 रनों से वहां विजय हासिल की सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने। दो जो टीमें आमने सामने हो रही है, इमाद टाइगर्स और फ्रेंड्स 11 पारिमपुरा। इमाद टाइगर्स उन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं, SR ट्रेडिंग कंपनी पारिमपुरा जो स्पॉन्सर कर रहे हैं इमाद टाइगर्स को। और दूसरी तरफ देखा जाए मुजैफ जॉइनरी, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं फ्रेंड्स 11 पारिमपुरा को। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड में लिया गया, स्ट्रोक उस दिशा में खिलाड़ी है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। स्क्वायर लेग से आए हुए खिलाड़ी ने एक शानदार कैच लिया। मैदान छोड़कर वापस जाना होगा फिरोज को। बड़ा झटका लगा, बड़ी सफलता हासिल की गई। Once again he looks back in disbelief, but that was a wonderful take. Plucked that one from thin air, apple plucking like that. But that was a superb take and well held. Firoz has to walk back. Wicket number 2 tumble is 57 for 2. Well, I was just talking about after the power play. What will be the ply? We're still in the power play. We are still one ball away from the completion of the mandatory power play. They're 57 for the loss of 2. Now they lost another one. Second one bites the dust. And there comes the newcomer. He's just whacking into the middle. Exactly, no doubt about that. That is the beauty of the game of glorious uncertainties. And we feel privileged to throw out the word glorious uncertainties. It is because of that glorious uncertainty principle. Cricket works. It is 57 for the loss of 2 after 5.5 balls. In the meantime, last ball coming up. Umar, the man among the wickets, yet to concede a run. And in the meantime, 57 for the loss of 2 after 5.5 balls. A slip in place, then followed by third man. Another Rishi is still busy man on the park today. Busiest Campana. He is settling the fielders. He is designing the fielders on either side of the track. Contraders, but Sharik and Shir Punjab are watching. Okay, friends 11 Parimpora chasing 169. Gava with 2 slips in place. Oh! They've nearly gone down to the throat of wicketkeeper, but the ball bounced in front of the wicketkeeper. Adil Kachru, batsman survives early scare. 6 down, 57 for 2. Chase underway. 169 is what they require. It is a wicket madden. आदिल काशरू ने केवल 27 रन बनाए, पर एक ऐसे खिलाड़ी हैं आदिल काशरू, बल्लेबाजी में सहयोग ना भी करेंगे तो सब कुछ जोक देंगे वो फील्ड में। उस कैलिबर के खिलाड़ी हैं। और आपने देखा होगा जब भी गेंद गई विकेट कीपर की तरफ, कभी मुश्किल था गेंद को गैदर करना, जो दोहरा उछाल पिच में नजर आ रहा है, पर उन्होंने कभी गेंद को अपने पीछे जाने नहीं दिया। तारीफ के काबिल। Exactly, praiseworthy effort. The man behind the stumps is mean to that. Every man behind the stumps is called to the half team. It is 57 for 2 after 6 overs. We are going to be in over number 7. Imaad Tigers trying to tighten the nose of the batting side, but the batters are doing their level best. They are chewing the balls at the moment. They played a madden over, but they does well. 57 of 6. यावर वानी भी मैच का आनंद ले रहे हैं। बट राशिद के साथ हाफिज इलियास भी बने हुए हैं। एजाज जो गेंदबाजी करने की तैयारी में, लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है, स्क्वायर लेग है और स्लिप कॉर्डन में कुल मिलाकर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। मैच एक दिलचस्प मोड़ पर लाके खड़ा किया है। यहाँ से एक और सफलता तो इमाद टाइगर्स की टीम मजबूत स्थिति में नजर आएगी। बैकफुट पर सरकते हुए चले गए, जगह बनाई स्ट्रोक खेलने के लिए, आधा ड्राइव आधा पंच, गौहर लगी वहां पूछे गेंद को फील्ड करने के लिए। उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, 1 रन खाते में। इस 1 रन की बदौलत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं बल्लेबाज। 57 हुआ टीम का स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 6.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 58 for the loss of 2 wickets. We are in over number 7 of the match. It is Mudassir out in the middle alongside Riaz ball. This time worked away off his hips. Will pick up a run. Will collect that single. 59 for the loss of 2 after 6.3 balls. They still require 110 runs to win this match from remaining 82 bowlers. Shahid Ganai, Lon Bilal and Mohammad Imran. You can send us the digital coupon of love. We are sending the stars to JK Sports Time. We are really indebted to your love. Keep sporting, and we are on our toes all the time, 24/7 for you guys, wherever you are. Stay there. No slip in place now. There is a wide gully. This time scooping that one. There is no man behind scare. Will this go down to the boundary? Only the time will tell us. It's spat past up the turf into the boundary for 4. 60. We'll have to wait and watch.
Umpire has signaled the boundary, but we'll have to wait and watch. We'll have to wait for the Crick Heroes, and now it has been updated to 64 for the loss of 2 after 6.4 balls. 105 more runs required of 80 balls with 8 wickets in hand. Cricket at its best. Well, we can't get better than this. Final match, and they are 64 for 2, chasing 169, dabbing that one in front of point. No run there. 64 for the loss of 2. Last ball coming up. Ijaz has conceded super 41. That's a good ball. Equally to the task played. Back to the ball in the follow through. No run there. 64 after 7 overs at the cost of 2. They need 105 runs of 78 balls. Not gonna be easy, but it is still within the radar. It is possible from here on. Not an uphill task, but it will take the courage, the caliber, and the dedication of the batters out in the middle. 64 for 2 after 7 overs. Ijaz Dar is watching Pervez Ahmed and Mohammad Imran alongside Ijaz Dar. Fresh a wicket madden to start with, now in his second over. The man who picked up a wicket and put his side in a kind of ascendancy. But now only the time will tell us. Can he pick up another one? Can he chip in with another wicket? Or he will be taken to the cleaners? Only the time will tell us. This broadcast is brought to you by Anthem Supports India, Fashion Feast, the shining star power. Oh, that's pulled, but there is man out in the middle. Oh, has taken that one. Another one bites the dust. Can you believe? Another man looks in disbelief, but he will have to walk back. What a take. A wonderful catch. Sam Man there at the mid-wicket boundary. Hold us on to the ball. There goes wicket number 3. स्टार्स भेज रहे हैं वीवर, अपना प्यार जता रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए. इस फिरिस्त में कुछ और नाम है: रियाज मंजूर, उमर नज़ीर, खान सलीम, शाहिद भट्ट, वानी इरशाद, जावेद हुसैन और पीर नदीम. आप सभी दर्शकों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से. आप जो प्यार दे रहे हैं, आप जो साथ दे रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया. यहाँ मुसीबत में अब नजर आ रही है फ्रेंड्स 11 पारिमपुरा की टीम. 64 हुआ टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर. 3 बड़े नाम फेरोज, तौसीफ और रियाज पॉल मैदान छोड़कर वापस गए. डगआउट से नए बल्लेबाज अब नमूदार हुए. महराज को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए, जबकि मुद्दसिर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उमर गाला को मिलने वाली है दूसरी सफलता. अब तक कोई रन उन्होंने खर्च नहीं किया. पहला ओवर तो विकेट मैडन गया था और इस ओवर की शुरुआत में उन्होंने विकेट हासिल की. जिस चीज को छूते हैं सोना बनती जाती है. 64 for the loss of 3. We are in over number 8 of the match. The very first ball of the 8th over, and Umar once again picked up another wicket. Ashiq Hussain, Kapoor Chand and Peer Nadeem, thank you for your love and support. And this is another guy who sent us the stars. Thank you. The newcomer will face the man who's got second wicket in this very over. And Adil Rishi not happy, spitting venom and fire once again. Shahid Bhatt, thank you. Kapoor Chand and Gulzadar are watching. 64 for 3. Over number 8 in progress as Umar continues to bowl. He has picked up 2 wickets, yet to concede a run. 1 slip in place. Third man there, backward a point. Extra cover on the boundary. Next one, the newcomer keeps that one out towards the mid-off. Picked up a single. Umar Nazir, the other guy, join us. The party to send us the stars. Thank you. Basim Ahmed and Kapoor Chand are watching. Another single. That's the very first run conceded by Umar. Thank you. Abdul Bhatt 65 for 3 after 7.2 balls. Third ball coming up. 65 for 3. Slip in place. That's a good ball. Equally to the toss. Keeps that one out towards the backward point. No run there. 65 for 3. वो जो विकेट हासिल वहाँ की गई थी जब शॉट हालांकि मिड विकेट की दिशा में वो गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाना चाहते हैं, उस बार क्रॉस स्विंग के साथ वो गेंद की थी और उतना उछाल तो नहीं मिला. कमेंट हुए थे बैकफुट पर कि स्ट्रोक लेना है उसी दिशा में लेना है और वहाँ तैनात खिलाड़ी मोहसिन ने एक शानदार कैच लिया. उमर गाला की अगली गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक. गेंद बॉलर के बगल से बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए. ये बॉलर्स बैक ड्राइव हमेशा देखने लायक रहता है. न सिर्फ बल्लेबाज खेलना पसंद करते हैं बल्कि दर्शक देखना भी पसंद करते हैं इस स्ट्रोक को. और किस तरह का स्ट्रोक देखने को मिला. गेंद बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए. इस चौके के साथ 69 हुआ टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर. 69 for 3 after 7.4 balls. As Umar continues to bowl, he has conceded 5.
That was a wonderful shot. That ball was back drive, yielded the boundary. And on that occasion, now they're going to come back for the second. They push for the second and made it with ease. And away ball shy comes in. Adil Kachru can't do very much, doesn't get behind the ball. It flies away at 71 for 3. 7.5 balls done and dusted. 8th over in progress, 98. They require even below 100 now. They require in double figures 98 more runs of 73 balls. One slip still continuing, then followed by third man and back with a point. Extra cover on the boundary, short extra cover inside 30 yard. Once again dabbing it in front of point. Adil Rishi the man there, safest man on the park. No run there, score a man 71 for the loss of 3 after 8 overs. Well, you can continue to send us stars. We are really indebted to your love and support. You can send us the stars. We are eagerly waiting for your love. It's your sport which keeps we people on our toes. 71 for 3. 8 done. We are going to be in over number 9 of the match. It is gentle breeze on its way. We are enjoying the moment here at the centre. So are our beloved viewers enjoying back home and back in their offices. Some terrific and prolific batting from the batting side and some chin music from the bowling side. They're keeping things tight, and this is totally ordinary stuff. It is 71 for 3 after 8 overs. WPL का अपडेट क्या है? वहाँ सुल्तान वॉरियर्स ने 34 रनों से जीत हासिल की और पंजीपुरा क्रिकेट क्लब जिन्हें जीतने के लिए 112 चाहिए थे, टीम काफ़ी दूर रही, 77 रन ही बना सकी। इस बार बढ़िया गेंद स्टंप्स की लाइन में, मिडल स्टंप की सीध में पिच होती हुई गेंद ऑफ स्टंप छोड़ती हुई चली गई। आदिल ऋषि ने डॉट गेंद के साथ यहां अपने सिपल की शुरुआत की है। अपना पहला ओवर कर रहे हैं आदिल ऋषि कमेंट्री बॉक्स छोर से। आदिल ऋषि की गेंद इस बार मिडल स्टंप पर, गेंद को निकाला मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद बैक फुट पर सरकते हुए चले गए, खूब ताकत लगाई इस स्ट्रोक के पीछे, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ 75 टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 8.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। इमाद टाइगर्स ने 168 बनाए, 169 चाहिए जीतने के लिए। फिर से बिल्कुल उसी किस्म की गेंद थी, पर इस बार स्टंप से ज़्यादा दूर नहीं, वो जगह नहीं बना सके स्ट्रोक खेलने के लिए, लॉन्ग ऑन की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात, 1 और रन खाते में। 76 ओवर टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। ओवैस भाई बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। ओवैस वानी जो ओनर हैं, ओवैस भाई ओनर हैं किंग्स एंड क्वींस कैफे एंड रेस्टोरेंट के। ऑन साइड में स्ट्रोक लेना चाहते थे फाइन लेग की ओर, पर गेंद विकेट कीपर आदिल कासरू के सर के ऊपर से चली गई, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ 80, 3 विकेटों के नुकसान पर। 4 गेंदें हुई है इस ओवर की, 9 रन अब तक इस ओवर में खर्चीला ओवर जाता हुआ। 80 for the loss of 3. That was a wonderful improvisation, and the wicketkeeper can't do very much. That flies over his head down towards the straight long stop area, down to the boundary for 4. 80 for 3. We are in over number 9. Adil Rishi goes. That flies off the outside edge. That one goes into the third man boundary for 4. Third boundary of the over. The warrior is losing patience here at the centre, and that is really gonna put them in the onto the back foot straight away. And we can also use a word here that puts insult, that adds insult to the injury. The ball flies up the outside edge and goes down to the third man boundary for 4. 84 now for the loss of 3. 9th over in progress. Last ball coming up. Oh, once again beautiful looking shot, but this time around Philly gets around in time and keeps the scoring down to 0. Nicely fielded there. It was almost gone over his head there. The ball bounced awkwardly in front of him, but it does putting hand onto it over his head and does well to limit the scoring down to 0. 84 for 3. Expensive, but 13 of it. 84 for 3 after 9 overs. 11 overs to go. 84 for the loss of 3 after 9 overs. With 11 overs to go, 66 balls remaining. 85 is what they require to win this match. आसिफ डार मैच का आनंद ले रहे हैं केयू से, और बने हुए हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से इलियास मंजूर, और उसके साथ साथ मसरूर भाई भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आसिफ डार के साथ डार सजाद, जबकि उजैब अब्दुल वहाब भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इब्राहिम वहाब और जूरीमंज से वो मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। एजाज भट्ट भी बने हुए हैं डार सजाद के साथ। 84 हुआ टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर।
84 रन में 3 झटके लगे। 9 ओवरों का खेल अब तक हुआ है, 10वां ओवर शुरू होने को है। गेंदबाजी में क्या परिवर्तन किया जाएगा या नहीं, और परिवर्तन के तौर पे ही गौहर लेगी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं टीम के कप्तान आदिल ऋषि। टीम के कप्तान वो कवर में मौजूद हैं। बैकवर्ड पॉइंट के जो खिलाड़ी हैं वो दायरे के अंदर हैं, और पॉइंट पे भी एक खिलाड़ी है दायरे के अंदर। स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी है। गौहर लेगी की गेंद लेग स्टंप से बाहर पिच हुई गेंद अंदर की ओर आई, मिडल स्टंप की ओर आती हुई गेंद, और गेंद के आने का इंतजार किया। स्पिन होती हुई गेंद को विद द स्पिन ही धकेला ऑन साइड में। स्क्वायर लेग से आए हुए खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन खाते में। उमर गाला जो फील्ड कर रहे हैं पॉइंट क्षेत्र पे, उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। 2 सफलताएं अर्जित की, ज्यादा खर्चीले साबित नहीं हुए। गौहर की गेंद इस बार फिर से ड्राइव करने के लिए गए मुदस्सिर रिंकू। गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई। 1 रन मिलेगा रिंकू को, और मुदस्सिर रिंकू के खाते में ये 1 रन। उनका निजी स्कोर 19 हुआ है। हालांकि 20 रन बनाए मुदस्सिर रिंकू ने, केवल 13 गेंदों का सामना किया। इस ओवर में अगली बार स्टंप्स की लाइन में गेंद थी, स्टंप्स को कवर करके धकेला, ऑफ साइड की ओर चली गई गेंद। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, एक अच्छा ओवर जा रहा है। 86, 3 विकेटों के नुकसान पर। सईद नासिर डोडा से ऑफिशियल कमेंटेटर हैं YSC डोडा के, जबकि RD फही मैच का आनंद ले रहे हैं सबाडार के साथ, और एजाज बट भी बने हुए हैं। WPL में आज के दिन का जो पहला मुकाबला था उसको सुल्तान वॉरियर्स ने अपने नाम किया, पंजीपुरा क्रिकेट एकेडमी को हराया, और पंजीपुरा क्रिकेट एकेडमी 112 के लक्ष्य का यहाँ पीछा नहीं कर सकी। और अब जो वहाँ दूसरा मैच है आज के दिन का, उसका अपडेट नहीं आया है अभी तक, और वो अपडेट आएगा तो हम आप तक पहुँचाएंगे। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला, हालांकि 2 मैच थे आज उनके, सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के, और दूसरा मैच जो उनका यहाँ रवां दवा है WPL में, 3 ओवरों का खेल वहाँ हुआ। 28 रन, कोई झटका नहीं लगा सुल्तान वॉरियर्स को। Thank you, Shahid Bhatt and Sajjad, for your love. 86 per 3 after 10 overs. Halfway down, 86 per 3. They require 189. 83 more runs of 60 balls. Of the first passage of play, we have seen 60 balls coming. 86 were scored at the cost of 3. But the next passage of play really awaits us some ups and downs, some crusts and tops, and some ups and downs, some harem-scarum things will be unfolding here at the Sunter in the next passage of play of 10 overs, 60 balls, and they require 83 more runs with 7 wickets in hand. This is Kamarwari Ramzan T20 Cricket Tournament being brought to you by JK Sports Time in collaboration with Anthem Supports India, Fashion Feast, the Shining Star Pampur, Arco Fenestration, and Nasir Sports Mart. Fresh over begins. So-called the final passage of play. We are into the decisive passage of play. The next 10 overs, the very first ball, dot delivery. He has conceded so far 13 runs of his 1.1 ball. He continues. Thank you, Mushtaq Ahmed. In the meantime, goes and bows. That is a wonderful shot. Extra cover drive, and that goes into the extra cover boundary for 4. No need to run for those. 4 of those, in fact. Egoistic Nadu. That is a terrific shot. Adil Rishi can't do very much, and he has been belted for a 4. 90 for the loss of 3. एगास्टिक नडू, रेगुलर व्यूअर JK स्पोर्ट्स टाइम के फिरदौस अहमद, सुहेल अहमद, इशफाक शेख, अरशद मीर, और देखा जाए आसिफ डार भी बने हुए हैं, KUC मैच का आनंद ले रहे हैं। 90 रन टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। इलियास और मसरूर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इस ओवर में अगली बार इस बार गेंद को धकेला बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। उमर गला गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, दौड़ना बेकार। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। 2 into on the trot, 94 for 3. Once again, Width given. The seasonal campaigner is losing his calm here. He is believed to be the cool customer, but this time round, once again, Width given and offering that width and asking the batsman to break free and to use his arms to great effect, and that is a wonderful shot down to the backward point boundary for 4. 94 for 3. We are in over number 11 of the match. 75 needed of 57. Is he going to change then? Yes, it does. Switches to round the wicket, goes and bows. Oh, that's a kicker through the air. Oh,
Wicketkeeper fumbles. So is the first slip field. It goes into the third man area. We'll have to wait and watch. We'll have to wait for the decision which is yet to arrive. Both the batters pushed for the third one and made it with ease. 3 runs fetched and 1 wide. 4 wides to be precise. And score moves to 90s. Oh no, it is 3 byes given. 97 for 3. We are in over number 11 of the match. Started off with a dot, then conceding 2 boundaries, followed by 3 runs. That means 11 of this over. And score moves to 97 for the loss of 3. We are in over number 11 of the match. 72 of 56 balls. This time goes on to the back foot. Chance of a run out. Well directed would have been a goner on that occasion, but in the end made it. And that single takes the score to 98 for the loss of 3. We are in over number 11. 98 for the loss of 3. We are in over number 11 of the match. 71 of 55 balls. Sajjad Jana, Lone Barkat and Mushtaq Ahmed. Thank you, Sajjad. 98 for the loss of 3 wickets. Lone Mushu is watching. That's a good delivery. Beaten all ends up. Well, I didn't know how that missed the stumps on that occasion. That just flies over the sticks. Had that bailers been on, this could have been well close on that occasion. That marks the completion of over number 11. 11 done. 98 for the loss of 3. 98 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और देखा जाए 11 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। मुद्दसिर ने अब तक 28 रनों का योगदान दिया, 18 गेंदों का सामना किया और महराज ने 8 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया। आदिल रशी खर्चीला ओवर ये भी रहा आदिल रशी की तरफ से और कुल मिलाकर 21 रन खर्च किए। 2 ओवरों की गेंदबाजी उन्होंने की। गौहर लगी पहले ओवर में 7 और अगले ओवर में उन्होंने रन तो पहले ओवर में 9 और जो उनका दूसरा ओवर था वो काफ़ी अच्छा गया था और ऐसे में अपना तीसरा ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं गौहर लगी। 98 टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। मुद्दसिर मलिक डार सजाद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। गौहर लगी अपना तीसरा, हालांकि यहाँ दर्शा रहा है शायद दूसरा, पर उनका ये तीसरा ओवर है और वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गौहर लगी अपना दूसरा ओवर करने के लिए तैयार। मिडिल स्टंप पर पिच होती हुई गेंद बैकफुट पर सरकते हुए चले गए। जगह बनाई स्ट्रोक खेलने के लिए महराज ने। 1 रन मिलेगा बल्लेबाज महराज को, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं। 28 के स्कोर पर 18 गेंदों का सामना किया अब तक मुद्दसिर रिंकू ने। वो सामना करने की तैयारी में। मुद्दसिर सामना करेंगे गौहर लगी का। गौहर लगी की गेंद ऑन साइड में स्ट्रोक खेलना चाहते थे, वो इम्प्रोवाइज शॉट खेलना चाहते थे पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं। 2 रन मिलेंगे मुद्दसिर को और 22 के रूप में ये 2 रन आए हैं। इन 2 रनों की बदौलत 99 से बढ़कर 101 हुआ टीम का स्कोर। 3 झटके लगे। गुलजार लोन, ओवैस खान, एप्पल वैली और उसके साथ साथ ओवैस भाई भी बने हुए हैं। आसिफ डार के साथ जॉन सोफी भी मैच का आनंद ले रहे हैं कि मसरूर और यासिर मलिक भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। गौहर लगी इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार। ऑप्शन से बाहर बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, बल्ला नीचे रहा। गेंद बल्ले के ऊपर से विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। आदिल काशरू स्टंप के काफी करीब नजर आ रहे हैं। गौहर लगी उन्होंने अब फील्ड में मिश्रण किया। स्लिप कॉर्नर में खिलाड़ी हैं, शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर, क्या उस दिशा में गेंद जाएगी? गौहर लगी की गेंद ऑन साइड में लिया गया। स्ट्रोक गेंद मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। लगातार रन आ रहे हैं मुद्दसिर के बल्ले से और ये विपक्षी टीम इमाद टाइगर्स के लिए अच्छा संकेत नहीं है। 105 टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 11.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 32 रन बनाए मुद्दसिर रिंकू ने। दाएं हाथ के बल्लेबाज वो सामना करेंगे गेंदबाज गौहर लगी का। गौहर लगी इस ओवर की अगली गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर, फिर से विकेट मिली। कवर के दरमियान से खेला गया स्ट्रोक। एजाज रिगू ने कोशिश तो जरूर की पर वो गेंद से दूर रहे और गेंद उन्हें चकमा देती हुई बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 105 से बढ़कर 109 हुआ टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 109 for the loss of 3 after 12 overs. 8 overs to go, 48 balls. All the beloved viewers, you can send us stars and we would definitely love to include your names. 109 for the loss of 3 after 12 overs. With 8 overs to go, 48 balls remaining. 60 more runs is what they require from remaining 48 balls.
Now the game is even more poised up and balanced, leveled, as the seasonal companion of their side, Rishi begins as the fresher. In his third, he has conceded too many runs of his first 2 overs, and he is going to bowl the third over of his quota. No slip in place, fly slip in place, then followed by Gully, backward a point. Short extra cover and extra cover right on the boundary, followed by long off on the onside. There is long on in place, mid wicket in place. The very first ball, good ball, right on money, on target, and batsman manages to keep that one down and out towards the short extra cover. Both the batters scamper through for a quick single, played into the pocket of that offside, and that single takes the score to 110 for the loss of 3. 13th over in progress. 12.1 ball, and Rishi has conceded 23 runs. This is Adil Rishi for you. Now slip comes a bit closer, and there is also short fine in place, and a wonderful shot up the back foot. Once again a compact looking cut, but find a sweeper cover in place. Only a single there. 1-1-1 on the board for the loss of 3. It's 1-1-1. It is Nelson on the board for the loss of 3. We are in over number 13 of the match. Wide slip, then Gully back with a point. That's a good shot in the air for a while. 2 fielders in pursuit. Adil Zoor gets to the ball, picks it up, sends us in the return. There is only a single. That single takes the score to 1-1-2 for the loss of 3. Over number 13 in progress. They require still 57 more runs of 45 balls. This over going good. So far 3 singles out of 3 balls, 25 of his 2.3 overs. Adil Rishi goes and that's in the air. Will this be taken? Fielder settling underneath. Hold this on to the catch. Reverse cupping, and there goes wicket number 4. Lapse of concentration. Got over cautious, and that's it. Curtain is down for the batsman. Batsman gets the last lap over the batter. The 112 for 4. Is that the breakthrough they were looking for? I think. Is there any twist in the tail? Next passage of play will be brought to you alongside me, my colleague here in the com box. 112 for 4. 112 4 विकेटों के नुकसान पर यहां से इम्तियाज मल्ला का, हालांकि अभी आना बाकी है। डगआउट से नए बल्लेबाज नमूदार हुए जो मैदान की ओर आ रहे हैं। आकिब खान वो डगआउट से नमूदार हुए हैं। उन पे काफ़ी दायित्व होगा, जिम्मेदारी होगी। और दूसरी तरफ देखा जाए इम्तियाज मल्ला का अभी आना बाकी है। 1-2 ऐसे नाम हैं जिनके पास क्षमता है जो इस मैच का नतीजा बदल सकते हैं। आप बने हुए हो जेके स्पोर्ट्स टाइम पर, इस मैच का आनंद ले रहे हो। स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए। कमेंट सेक्शन में जाकर सेंड स्टार्स के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो आप, और आपके द्वारा दिया गया ये डिजिटल गिफ्ट हमारा हौसला बढ़ाने के लिए तो काफ़ी होगा। आदिल रशी के साथ बातचीत कर रहे हैं आदिल कासरो दूर उस ओर जो स्टंप के पीछे विकेट कीपिंग के फराज अंजाम दे रहे हैं, वहाँ से वो चलते बने, कुछ बातचीत की आदिल रशी के साथ। आदिल रशी के पास अनुभव है, और वो जो मशवरा दिया वहाँ विकेट कीपर बल्लेबाज आदिल कासरो ने, देखना होगा ये टीम के काम आएगा या नहीं। नए आए बल्लेबाज आकिब खान के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है, फील्ड सेट की जा रही है। क्या है फील्ड में? ऑफ साइड की अगर मैं बात करूं, स्लिप कॉर्नर में कुल मिलाकर 2 खिलाड़ी, लगभग शॉर्ट थर्ड मैन के आसपास खिलाड़ी हैं जो दायरे के अंदर है। बैकवर्ड पॉइंट थोड़ा सा फाइन, और देखा जाए स्वीपर कवर के आसपास एक खिलाड़ी है, कवर लगाया गया है। लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी है। मिड विकेट की ओर खेला गया, स्ट्रोक आते ही आकिब खान ने खाता खुला अपना। टीम के खाते में 1 रन, 113 हुआ टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। आदिल रशी जो गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से, इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन खर्च किए। इससे पहले जो 2 ओवर की गेंदबाजी की थी उसमें 21 रन खर्च किए थे। फिर से उसी दिशा में स्ट्रोक लेना चाहते थे, और उस ओवर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। मोहसिन ने पहले प्रयास में उनसे हल्का सा मिस फील्ड हुआ, और उसके बाद वापसी की 114, 4 विकेटों के नुकसान पर। 13 ओवरों का खेल हुआ है, इस ओवर में केवल 5 रन आए हैं। 114 हुआ टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। अब जो इक्वेशन है 55 चाहिए जीतने के लिए, 42 गेंदें बची हुई हैं। एक अच्छा मुकाबला आपकी ओर आ रहा है। Exactly 114 for the loss of 4 up to 13. There was 7 overs remaining. Mir Javed, Liaquat Ali Khan and others at the Portal Live broadcast. 114 for 4. We are in over number 14 of the match. Adil Rishi bowled that superb over and kept the batters under check. He tightened at the nose to larger extent and didn't let the batters break free.
and they need few more overs. Can their bowlers chipped in with few such overs, and can the batters be chipping the balls like that? We witnessed it in his over. 114 for 4 after 13 overs. Boy Lone Musha and Hussain Ali is watching. 114 for 4. One slip in place. Gower begins the fresh over. Gower leggy goes and bows. Good ball. Right on target. On money straight away. And batsman equally to the task. Covered the line up the ball and playing it back to the bowler. No run there. Score remains 114 for 4 as we are in over number 14 of the match. This time full length delivery. Dispatched towards the long off. Will pick up a single and he will be able to collect that only single out of it. 115 for 4 after 13.2 balls. 54 more runs of 40 balls. That's a good ball. Once again bowled on middle and leg. And that little moment in the end, and batsman stays calm, patient right behind the ball. No run there. 115 for 4 after 13.3 balls. Flighted trajectory. It was there to be put away. Batsman managed to do so, but the ball came off the lower part of the blade, toe end of the blade down towards the long on. 1 run fetched. 116 for 4, and another good over. Will he be able to finish it in style? Another good ball. Are they gonna run? He was nearly halfway down and he has to walk back to the crease in time. 116 for 4 after 13.5. Gabalegi, simply you beauty. Well, Lone Musha's second match of the WPL is coming up for Sultan Warriors. Short one in the air, but that one flies down to the backward point boundary. Phil gives the chase, won't get there. That is a boundary. It has been well said, all is well that ends well. Can't finish it in style. That boundary takes the score to 120, 14 done. And that means they require below 50 now. They require 49 more runs of 36 balls. 36 गेंदे 49 रन चाहिए जीतने के लिए. जो आस्किंग रेट है 8.17 की. एक अच्छा ओवर जा रहा था, केवल 2 रन आए थे अब तक और अचानक ये जो चौका लगा इससे यहाँ भरपाई की. स्कोर कार्ड में 4 रनों का इजाफा. 120 4 विकेटों के नुकसान पर. आदिल रशी ने अब तक 26 रन खर्च किए. 3 ओवर की गेंदबाजी हुई. हालांकि आप स्क्रीन पे 27 रन उन्होंने खर्च किए गेंदबाजी में. अपना वो आखिरी ओवर करने जाएंगे जो फिर इसके बाद बचे हुए 5 ओवर होंगे उसमें 2 ओवर उमर गला के होंगे. उसके खिलाफ स्ट्रोक लेना तो आसान नहीं रहेगा. ऐसे में इस ओवर में चाहेंगे कुछ बड़े स्ट्रोक लिए जाए. यहाँ बल्लेबाज आकिब खान. आदिल रशी के गेंद आकिब खान को ऑन साइड में लिया गया. स्ट्रोक मिड विकेट की ओर. उस ओर खिलाड़ी तैनात. उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया. 1 रन खाते में. इस 1 रन की बदौलत अब टीम का स्कोर 121 से बढ़कर 120 से बढ़कर 121 हुआ है. 14.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है. महराज वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में. आकिब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं आकिब खान, जबकि आदिल रशी गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से. राउंड स्टंप्स ऑफ स्टंप से दूर बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ. कौन बनाती हुई विकेट कीपर आदिल काशरू के ग्लव्स में चली गई. आदिल रशी ने 2 गेंदें जो की इस ओवर की केवल 1 रन खर्च किया. फिर से विकेट मिली. बैकफुट पर जाकर यह कट किया गया. उमर गाला के हाथों गेंद फील्ड हुई. 1 रन खाते में. न मालूम क्यों ये देखते हुए कि अभी 6 विकेट बचे हुए हैं टीम फ्रेंड्स 11 पारिमपुरा के पास, पर बल्लेबाज दबाव में नजर आ रहे हैं. इम्तियाज मल्ला का आना बाकी है. रफीक बाबा टीम लाइनअप में. इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके ऑफ स्टंप के काफी करीब से गेंद विकेट कीपर आदिल कास्ट्रो के ग्लव्स में चली गई. 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर की. 122 टीम का स्कोर. अभी भी 47 रन चाहिए जीतने के लिए. 32 गेंदें बची हुई हैं. आदिल रशी 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं. इस ओवर की 5वीं गेंद आदिल रशी करने जा रहे हैं. आकिब खान को. आकिब खान ने लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक लिया. उस ओर आदिल जोहर मौजूद. आदिल जोहर से मिस फील्ड हुआ. गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए. वहां तैनात खिलाड़ी आदिल जोहर से ये मिस फील्ड हुआ. एक अच्छा था और अब तक केवल 2 रन आए थे और अचानक मिस फील्ड हुआ. गेंद बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए. इस चौके के साथ 6 रन अब तक इस ओवर में. 126 हुआ टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर.
ओवर की आखिरी गेंद इस बार खेलना चाहते थे, नीचे रहती हुई गेंद पूरी तरह से चूके स्ट्रोक लेने से, और यहाँ बल्लेबाज को ज्यादा दोष तो नहीं दे सकते हो क्योंकि उछाल तो ना के बराबर था, पैड पर लगी गेंद। इस तरह से आदिल ऋषि ने यह सफलता हासिल की, 5वां झटका लगा, 126 5 विकेटों के नुकसान पर 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 30 गेंदें जीतने के लिए चाहिए 43 रन। Surely gone on that occasion. He was a goner, trapped, pretty plumb, deadwood plumb, and umpire raises the finger. Aqib Khan has to walk back. He departs here 1, 2, 6 for 5, and this is Adil Rishi for you. The beauty of that player of great standard. He has maintained his standard here once again today, and what a bowling, impressive, and has completed his quota of overs, conceding 33 and picked up a wicket, and that vital wicket, and this can set the tone for a big match. And I think this match is gonna go down to the time will tell us. Stay connected, stay tuned, don't fade away, don't go anyway, because the final passage of play of remaining 5 is coming your way live and exclusively via JK Sports Time. It is 43 of 30 balls. They require 43 with 5 wickets in hand of 30 balls. Imtiaz Mallah join us. Sultan Warriors batting first. They are 67 after 8 overs for the loss of 3. Once again, Claps is on course in their second match of the day. Well, 1, 2, 6 for the loss of 5. Sultan Warriors locking on for the second time. This is their second meeting of the day. Here it is final match of Ramzan T20 cricket tournament Kamarwari, and the wonderful stage is set for this all important cricket match. Lone Musha, Haris Dar and Mir Javed. Lone Musha, you might be knowing the name of an app that is called Crick Heroes. You may go there and find out the result of WPL. Match number 2 is underway there, and you can also get update from there. It is 1, 2, 6 for the loss of 5 after 15 overs. क्रिक हीरोज पे WPL के जो मैच का स्कोर कार्ड है वो नहीं आ रहा है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी, बैक फुट पर सरकते हुए चले गए और गेंद बैकवर्ड पॉइंट की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात 1 रन खाते में, और उनका कहना है किस चैनल पे लाइव होगा, और जो कोई मैच वहां से लाइव होगा वो JK स्पोर्ट्स टाइम पर होगा, और JK स्पोर्ट्स टाइम वहां अगर किसी दिन मौजूद नहीं रहेगा तो आप आनंद लेने के लिए वहां जा सकते हो। इस बार विट मिली फिर से स्ट्रोक खेलने के लिए उमर गाला वहां मौजूद है। एक रणनीति के तहत गेंदबाजी हो रही है, विट मिल रही है, शॉर्ट गेंदें कर रहे हैं ऑफ स्टंप से बाहर, उस दिशा में स्ट्रोक लेने की जो कोशिश हो रही है वहां खिलाड़ी को तैनात किया गया, और जानते हैं खिलाड़ी कि सिंगल अगर मिलते भी रहेंगे तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदिल ज़हूर की ओर गेंद गई, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, 1 रन खाते में। आदिल ज़हूर के हाथों गेंद फील्ड हुई, 129 5 विकेटों के नुकसान पर 15.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 27 गेंदें, 40 रन चाहिए। इम्तियाज मल्ला नाबाद इस बार खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके गेंद विकेट कीपर आदिल कासरू के ग्लव्स में। इम्तियाज मल्ला 2 तरह के स्ट्रोक खेलते हैं, एक जो उन्होंने खेलने की कोशिश की रिवर्स स्वीप, और दूसरा वो रैंप शॉट फाइनल के ऊपर से। नजरें रहेंगी इम्तियाज मल्ला पर, गेंद को खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई भी जा रही थी, अच्छा खासा उछाल भी था, और अंपायर ने हालांकि इशारा किया कि उछाल था, पर आदिल कासरू ने इशारा किया कि ऑफ स्टंप छोड़ती हुई जा रही थी, और जो हुआ सो हुआ। इम्तियाज मल्ला अभी भी नाबाद, और स्टांस देखिएगा, स्टंप तो नजर नहीं आ रहे हैं। सिरा लेती हुई गेंद स्लिप कॉर्डर के दरमियान से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। एजाज ने ये जो गेंद की थी, और बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे इम्तियाज मल्ला, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे से लगी, बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। शौके के साथ 133, टीम का स्कोर 36 चाहिए 24 गेंदों पर। A single boundary of an over. Well, single has been dried off, then followed by a boundary of the last ball. Balances the things once again. Once again it balanced the things. Look at the scorecard, 36 of 24 balls. They record at the rate of 9. Every over they need to score 9 runs per over. That means 9 and over. 133 for the loss of 5. Team join is for the pep talk. Team in a hurdle as per Imaad Tigers are concerned. And in the meantime of Friends 11 Parimpora, Rafiq Baba comes out with a message how to go after the remaining 4 overs, 24 balls.
they should try to play out the remaining 24 balls. That will be better thing to do at the moment. They have to take it down to the last ball, but 133 for 5 after 16 overs. Well, 36 of 4 overs. Can't say anything until the last ball is not bowled. Manzura talking about Sultan Warriors. They are 3 down at the score of 68 after 8 overs. They are in the second match of the day of WPL. My colleague wrote out that those matches which will be brought to you via JK Sports Time, and those which we won't be able to cover, you won't get any update from anywhere. You may tune into JK Sports Time. You will get the updates after every over. And Sheikh Javed and Meet Javed and Haris Dar are the power of live broadcast. 1-3-3 for the loss of 5. We are in over number 17. Nara is going to bowl. He has conceded 15 so far. Economical. His first spell for the last spell has been brought on. Kashmir, Adil Bashir and it's Rafiq Meet Javed are watching. Friends 11, Parimpora required 36 more runs of 24 balls. As Nara goes and bowls. Oh, he has cleaned him up. Clean bowled. And a wicket at the fag end of the innings. This will definitely set the tone, and this has really shifted the momentum their way. And Imaad Tigers, they are roaring back here at the centre. So is their crowd, so are their fans, their bystanders. They are rejoicing the moment. They are pumped up as they got rid of another big man. There goes the right-hander who was taking the bowler's son. He worked like one-man army. Lone Mahi is the part of live broadcast. One of the famous names. The man who captured all the picks and all those moments of every match in every nook and corner of the valley. Credit goes to Mahi for his wonderful work with the camera. WPL का अपडेट है. सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर 79 रन. 10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ. 3 झटके लगे. 133 for 6. It's a kind of a commercial break coming your way every now and then with a WPL update. 133 for 6. Now there are only 4 wickets in hand. You can drop in your comments, you can write us. We definitely love to include your comments. 133 for 6. Gentle breeze on its way. It is a kind of an inspiration for all of us here in the com box. Oh, Tiger now walks into the middle. I really forgot his name, but he walks into the middle at the fag end of the innings. This is Nazir for you, the man who possesses a lot of talent, caliber, class, grit, everything in this man. Can he be the man to take his side home? Only the time will tell us. Tarabid and Javed Yutu. Mir Javed is one of the regular viewers, I must say. For 6 after 16.1 ball, and with 23 balls to go, 36 more runs is what they require. This lovely broadcast is brought to you by Anthem Supports India, Fashion Feast, the Shining Star Pampur, and Arco Fenestration in collaboration with Nasser Sports Smart. Nara Beginners. The second ball goes and those dot delivery. Adil Kachu doesn't collect it with ease, but no harm done. Score man a static 133 for 6. We are in over number 17 of the match. Kubaib sends us in low from, and Lon Musha is also watching. Friends 11 Parimpora 133 for 6. Kachu standing way back the stumps. He is the wicketkeeper batsman of their side. As Nara goes, change of face. Nazir, they fetch one, or they're going to come back for the second. No, doesn't. Saw that fielder coming on to the ball quickly, cheekily, and batsman decided to settle for a single. 134 for 6. 134 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 3 गेंदें हुई हैं इस ओवर की, केवल 1 रन आया है. 35 रन चाहिए जीतने के लिए. 21 गेंदें बची हुई हैं और 50-50 मैच है. और वो जो मैं नहीं कहूँगा पलटाबारी है उस टीम का, इस टीम का, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे पलटाबारी है इमाद टाइगर्स का, 2 बड़े नाम इम्तियाज़ मल्ला और नज़ीर टाइगर क्रीज पे हैं. एक बड़ा ओवर आए तो मैच का नक्शा बदल सकता है, पर वो बड़ा ओवर टीम के लिए आएगा या नहीं, इम्तियाज़ मल्ला सामना करने के लिए तैयार है. मिड विकेट के जो खिलाड़ी हैं अब स्क्वायर लेग की ओर जाएंगे. क्या शॉर्ट गेंद आने वाली है इस बार. ऑफ स्टंप से दूर कौन बनाती हुई सिम मोमेंट देखने के लायक था. वाइड का इशारा आ रहा है अंपायर की तरफ से. 135 for 6 after 16.3. We'll have to re-bowl that one. That is the another agony for the bowling side.
He bowled that wide delivery. We'll have to reload and re-bowl that one. That is the agony. Extreme and absolute agony. 34 needed of 20 balls. Goes and bows. Once again, way outside the off-stump, and umpire once again call off a wide. 136 for 6 after 16.4 balls. Abid Bhatt, Dar Abid and Mir Javed are the part of live broadcast. 136 for 6. They require 34 more runs of 20 balls. 34 more of 20 balls. Here goes. Nara pulled out at the last end when he was going to release the ball. Pulls out of the ball. He was into his bowling stride, almost into his bowling stride. Mir Javed, he's watching from Guzrial Kralpura. 136 for 6 after 16.5. Last ball. Oh, that flies over the offside. Will this be cut off? Does. That's a wonderful fielding. Valiant effort there. And limits the scoring down to a single. 137 for the loss of 6 wickets after last ball coming up of the 17th over. 32 of 80. What it is displaying here. 137 for 6. And in the meantime, pacer goes. Oh, that is a hot tracker that has been pulled away and pulled to perfection. That on him a boundary. And once again, they're breathing again with that boundary. Score moves to 140 for 6. They need 29 of 18 balls. Is he going to bowl the next one? Has he completed the over? Mystery is there. Probability is there. 140 for 6 after 16.5 balls. Well, he bowled too many wide deliveries. And he is trying to rectify himself. And off the inner edge. And they ran one. Are they going to come back for the second? Well, Nazir wanted the second one, but Sadab Phil coming on to the ball, deciding against it. 17 done. 17 overs done with 3 overs remaining. 18 balls are going to come. We'll have to wait and watch. We're just waiting. We're having issues with the Cricket Heroes right now. At the moment, this broadcast is brought to you by Anthem Supports India, Fashion Feast, the Shining Star Papur, Nasir Sports Mod and Arco Fenestration. And we'd like to thank all the beloved viewers who hearing us, who are listening to us, who are watching this live broadcast, and who sent us stars time and again. Thank you all the beloved viewers and the entire family of JK Sports Time. We are in over number 18, 142 after 17. They need 27 more runs of 18 balls. They need at the rate of 9. Once again, quite balanced, poised up and leveled up. What a match. Now once again, they need at the rate of 9. 2 big hits of an over. That means they will definitely gonna seal the deal. But if they manage to chew few more balls, then this is gonna put pressure on the batting side. But only the time will tell us. 142 for 6 after 17. इमाद की जीत हो या जीत फ्रेंड्स की हो, और यहाँ एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है. 18 गेंदें 27 चाहिए जीतने के लिए. Exactly, worth to watch, and crowd is getting their money's worth. So our beloved viewers on JK Sports Time, everyone is getting what we promised to do early this morning. The big match, and the stars of the valley are locking horns. So are the stars in front of you on your screen right now. There is Adil Kachru right behind the stumps. Then there is Adil Rishi. There are 4 extra cover. There is Umagala. Umagala has picked up 2 wickets for 7 runs. What an spell from this man. Wonderful bowler. What a bowler he has been. Can he be the man? Can he pull things back again? उमर बिन आज़ाद इस अरहान मैच का आनंद ले रहे हैं. ओएस शफी ने सहयोग किया. ओएस भाई शुक्रिया. लेग स्टंप पर आती हुई गेंद डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड में. कुछ देर तक गेंद हवा में रही और सुकरले की ओर गई. उस ओर खिलाड़ी तैनात है 1 रन खाते में. उमर भाई, यहाँ गर्मी काफ़ी सता रही है और ऐसे में एनर्जी बचाए रखता हूँ. क्या अंत में मैच एक दिलचस्प मोड़ पे लाकर खड़ा करने में यहाँ सफलता मिलेगी खिलाड़ियों को. जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच सज धज कर आपके लिए हाजिर हुआ है. बिलाल ने सहयोग किया. बिलाल भाई आपका भी शुक्रिया. जबकि इमाद रशीद और मीर जावेद ने यहाँ सहयोग दिया, साथ दिया. 143 6 झटके लगे
इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज। इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक लिया गया, उस दिशा में खिलाड़ी हैं, क्या वो कैच कर पाएंगे या नहीं? एक आसान सा कैच लिया गया। इम्तियाज मल्ला की बड़ी विकेट हासिल की उमर गाला ने। क्या गेंदबाज है, जब कभी टीम को जरूरत थी वो सामने आए। और अब तक ये अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं, 3 सफलताएं हासिल की, केवल 8 रन खर्च किए। लाजवाब गेंदबाज। Exactly, terrific, wonderful. And that is really intriguing, and one has to give credit to this man. Terrific spell. Speechless. And Imtiaz Malla, disappointed his side. He's walking back, complete distraught. And he has to walk back. He can't keep his cool on that occasion. It is all about holding the nerve to go on to lift the title. But that determination is needed from both the sides. The team which will keep cool can go on to win this one. This is a nail biter. 143 for 7 as we're in over number 18 of the match. 17.2 balls done and dusted. 26 is what they require of 16 balls. Vascon wants the update of WPO. He will be shortly updated about that very league. It is over number 18 wherein Umagala continues to prosper, and his side too alongside him. He has picked up 3 for 8, and that tells the story. That tells the intensity of his bowling. 107 for the loss of 3 after 12 overs. Sultan Warriors batting first in the match number 2 of the day at WPO. It is Prince Imaad Parimpora required 26 more runs of 16 balls. We're into the fag end of the innings. We're into the death overs as this is over number 18. Gala goes and bows. Oh, knocked him over. What a delivery. Cleaned him up. Clean ball to bamboozle it. And the middle sea goes uprooted. Goes for the toss. And there, the joy in their dugout. So is on the field. They're on their toes. They're rejoicing the moment. They are entertaining all of us, and they are enjoying the moment at the center right now. They are 143 for the loss of 8 now, as we are into the final passage of play. रफीक बाबा अभी उसका आना बाकी है, वो आ सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और उसके बाद याकूब नाथ से आप ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते हो। मीर जावेद मैच का आनंद ले रहे हैं। अब जो सारी जिम्मेदारी आन पड़ी नज़ीर टाइगर पर, वो परेशान नज़र आ रहे हैं। क्या नज़ीर टाइगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे ही रहेंगे, यहाँ रफीक बाबा की विकेट हासिल करेंगे? उमर गाला स्ट्राइक पे रफीक बाबा हैं। मीर मसरूर मैच का आनंद ले रहे हैं मीर जावेद के साथ। लोन मुशा और बिलाल अहमद भी बने हुए हैं, जबकि एजाज भट्ट भी मैच का आनंद ले रहे हैं। उमर गाला ने क्या गेंदबाजी की यहाँ, और 8 रन अब तक खर्च किए हैं, 4 सफलताएं अर्जित की, अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं, हैट्रिक पे हैं। और यहाँ 5 रन हासिल करने की भी वो कोशिश करेंगे यकीनन। ये उनका केवल तीसरा ओवर है, चौथा ओवर भी उनका जरूर होगा, जो इस पारी का आखिरी ओवर होगा। क्या कप्तानी यहाँ दिखाई है आदिल रशी ने, अपने जो अनुभव हैं उनके पास पड़ा हुआ वो टीम के काम आया। शुरुआत इस कदर घातक हुई थी यहाँ विपक्षी टीम के लिए, और आकर्षक स्ट्रोक्स लगाए। मैच के चौथे ओवर में ही अर्धशतक पूरा हुआ था, वहां से वापसी करना, टीम को बैकफुट पर धकेलना और अब जीत की ओर अग्रसर होना। कमाल की कप्तानी आदिल रशी के दौरान हर गेंदबाज का सहयोग मिला, गौहर लगी हो या उमर गल्ला ने अपना जो अनुभव है उनके पास उसका इस्तेमाल किया। टीम को संकट से निकालकर एक बड़ी जीत की ओर वो लेकर जा रही हैं। हार और जीत का फैसला करने वाले खिलाड़ी नज़ीर टाइगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, रफीक बाबा स्ट्राइक पे। क्या ये हैट्रिक होगी कि नहीं? 143 टीम का स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर। जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर आप लाइव कवरेज का आनंद ले रहे हो। रमजान कप T20 का फाइनल अंजुम ग्राउंड कमरवारी से हम आप तक लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। इस बार ऑप्शन से बाहर स्विंग होती हुई गेंद, बल्ला चलाया, हड़बड़ाए अंदर से, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। नज़ीर टाइगर 1 मैन आर्मी तो जरूर है, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। क्या उन्हें स्ट्राइक मिलेगी? क्या वो कोई चमत्कार यहां कर सकेंगे या नहीं? टीम अभी जीत से दूर, 26 रन चाहिए, 14 गेंदें बची हुई हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद, रफीक बाबा को सिरा दिया इस गेंद को, और सिरा लेती हुई दूर उस ओवर गई थर्ड मैन की तरफ।
जब तक इनको फीड करके थ्रो किया जाए। 1 रन खाते में। इस 1 रन की बदौलत 143 से बढ़कर 144 हुआ टीम का स्कोर। 8 विकेटों के नुकसान पर 13 गेंदे 25 रन चाहिए जीतने के लिए। नजीर टाइगर स्ट्राइक पे, रफीक बाबा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। जेके स्पोर्ट्स टाइम पर आप चहल पहल दे सकते हो। दर्शकों की एक बड़ी तादाद यहाँ मैदान में भी मौजूद है, मैच का जो लुत्फ उठा रहे हैं। 144 for the loss of 8 wickets. We are in over number 18 of the match. Last ball coming up. Fantastic spell. 4 for 9. And is he gonna pick up the fifth here? No slip in place. We'll have to wait and watch. Is he gonna pick up the fifth? He has 1 over at his disposal. He will be bowling the final over of the innings, I think so. Indeed, exactly 144 for the loss of 8. Last ball coming up. Nazir on strike. Nazir dabs that one in front of point. Will pick up a single and keep the strike for the next over. 145 for 8 after 18 overs. They need 24 runs of 12 balls. Need at the rate of 12. And that means asking rate is 12 runs per over. And current run rate is 8.06. And what a match. Wonderful display by the two teams, and this broadcast is brought to you by Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Pampur, Arco Fenestration, and Nasir Sports Mart. Hayat Bangru Walaikum Salam and all the beloved viewers of JK Sports Time. 145 after 18 overs. 24 of 12 balls, and we'll have to wait and watch. It is going to be Nara who will be bowling. Nara is another guy who bowled some good lines and lengths, and he kept things tight. Whereas Khan, shortly you will be updated about the WPL match which is going on between Sultan Warriors and the opponents. They're at the center of Sheikhul Alam Sports. But in the meantime, 19th over. We'll have to wait and watch. Captain designing and maneuvering the field on either side of the track, because this over is going to decide the fate of the match. Final over, it's going to be Omagala. They would definitely love to finish things off in this very over. They will definitely try to reduce the deficit to larger extent. गेंदबाजी करने के लिए यहाँ आमिर नारा का इस्तेमाल करने जा रहे हैं आदिल ऋषि। आमिर नारा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने है नजीर टाइगर, दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे आमिर का। इस बार बढ़िया गेंद स्टंप्स की लाइन में सटीक यार्कर थी, हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं मिला। जैसे तैसे 1 रन नजीर टाइगर के बल्ले से आया है। इस 1 रन की बदौलत अब रफीक बाबा स्ट्राइक पे। 11 गेंदे 23 रन, आसान रहने वाला नहीं है। और यहाँ अगर झटका लगा तो याकूब नात आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। ऐसे में नजीर टाइगर पर अब ये दोहरी जिम्मेदारी है। सिंगल लेकर उन्होंने अपना छोर बदला, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे नजर आ रहे हैं। रफीक बाबा सामना करने की तैयारी में। अरशद हयात बंगरू मैच का आनंद ले रहे हैं अरशद मीर के साथ, जबकि फारिक फैरोज भी बने हुए हैं बिलाल अहमद के साथ। रफीक बाबा को एक गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर से फंबल हुआ आदिल कासरू से। खिलाड़ी वहां पहुंचे, गेंद को फील्ड करने की कोशिश बेकार। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। Well, that goes through his field stance, and wicketkeeper can't do very much. 150 comes up. Team 150. I mean, Friends 11, Parimpora. They're 150 for the loss of 8. They need 19 more runs of 10 balls. And Aminara can't believe his tough luck today. The ball goes through his field stance. Wicketkeeper can't do very much. That didn't raise up to what he expected. And if they have to blame anyone, that is the ball itself that gone through his field stance. It is 150 for the loss of 8. 10 balls remaining, 19 to get. Rafiq Baba on strike. Waits for Aminara. Amir goes. Crosses umpire and bows, and Rafiq hits that one. There's no man behind Sky. Is this gonna run down to the boundary? We'll have to wait and watch. Both the batters face the second one with ease. Are they gonna come back for the third one? It looks like, as Nazir proceeds for the third one. And Indian made it with ease. 3 runs added to the tally. 153 for 8 after 18.3 overs. They need 16 more runs of 9 balls. I think the game is quite a bit sliding and shifting its momentum their way. The tide has turned their way to larger extent, as they need just 16 of 9 balls. 16 रन चाहिए जीतने के लिए। 9 गेंदें बची हुई है। मीर हनीफ, मीर जावेद, जबकि सलाफी हिलाल भी मैच का आनंद ले रहे हैं।
यहाँ नारा आमिर गेंदबाजी करने की तैयारी में है, सामने है नजीर टाइगर, दाएं हाथ के बल्लेबाज, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी, गेंद बल्ला चलाया, गेंद पॉइंट की ओर गई, उस दिशा में खिलाड़ी हैं गौहर लगी, उन्होंने शानदार फील्ड का मुजाहरा किया, 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब तक कुल मिलाकर 9 रन आए हैं इस ओवर में, 153 से बढ़कर 154 हुआ टीम का स्कोर। 15 चाहिए जीतने के लिए, 8 गेंदें बची हुई हैं, एक बड़ा स्ट्रोक, मैच में वापसी हो सकती है फ्रेंड्स 11 पारिमपोरा की। Exactly. They need 15 of 8 balls. This is 5th ball. Amenara goes and both change of pace and equally to the task. Rafiq Baba does well, steering that one to the third man, picked up a single, 155 for 8. 14 of 7 balls. They require still at the rate of 12. Now the asking rate goes to 12. It climbs to 12. They need 14 of 7 ball. Last ball coming up. A 6 or a boundary here will mean Friends 11 Parimpora are in ascendancy, and they would definitely love to fetch a 6 or a boundary out of it. Nazir on strike. Here goes Amenara. Crosses umpire and ball. That has been dispatched back past the ball into the boundary for 4. And that boundary takes the score to 159. They need 10 runs of the last over now. Is it so? Yes, it does. They need 10 of 6 balls, but Rafiq Baba will keep the strike. 6 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 10 रन। उमर गाला वो स्ट्राइक पे रहेंगे, गेंदबाजी के लिए आएंगे, जबकि स्ट्राइक रहेगी यहाँ रफीक बाबा के पास। और ऐसे में अगर रफीक बाबा ने सिंगल ली पहली गेंद पर तो फिर 5 गेंदों पर 9 रन मुझे नहीं लगता है मुश्किल होनी चाहिए नजीर टाइगर के लिए। पर उमर गाला उस कैलिबर के खिलाड़ी हैं, उनके पास क्षमता है, उनके पास तजुर्बा है, और किस तरह यहाँ जीत हासिल करनी है टीम के लिए, और उस बात का इन्हें बखूबी तो इल्म है। नजीर टाइगर और रफीक बाबा क्रीज पे, यहाँ से अगर विकेट हासिल की जाएगी तो इस्तेमाल किया जाएगा याकूब नाथ का। याकूब नाथ से आप ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हो, ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते हो। उमर गाला गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अब तक हीरो नज़र आ रहे थे उमर गाला। 3 ओवर की गेंदबाजी, 10 रन, 4 सफलताएं। अब वो जो काम उन्होंने अब तक किया है उसको 4 चांद लगाने होंगे तो यहाँ जीत हासिल करनी होगी। दूसरी तरफ देखा जाए नजीर टाइगर, जिसके पास अनुभव की कमी नहीं है, एक बड़ा नाम है, काफ़ी सारे मैच उन्होंने अब तक जिताए होंगे अपनी टीमों को। क्या उस फहरिस्त में एक और मैच आज वो जिता सकेंगे अपने टीम को या नहीं, ये देखने लायक होगा। नजीर टाइगर का प्रहार किस तरह का होगा। यहाँ देखिए नासिर, मैं यहाँ पे ये बात बताऊँ कि अगर नजीर टाइगर को वो रोकने में कामयाब हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे तो मैच इमाद टाइगर्स के नाम होगा। अगर नजीर टाइगर बैटिंग साइड के ओर चला तो मैच खत्म। बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे पहले भी हालांकि किस्मत बहादुरों का साथ देती है। रफीक बाबा जब स्ट्राइक पे थे तो बाइज के रूप में 4 रन आए थे, और हमें हर जो एंगल है उस एंगल से सोचना होगा क्या यहाँ सुपर ओवर देखने को मिलेगा। उमर गाला, 2 जो टीमें यहाँ हैं, जीत और हार का फैसला करने वाला उमर गाला गेंदबाज, और उसी कैलिबर के बल्लेबाज हैं नजीर टाइगर जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। रफीक बाबा स्ट्राइक पे, सिंगल मिलेगी तो यहाँ ऐसा लगेगा सहमत होगी टीम इमाद टाइगर्स। मैच एक दिलचस्प मोड़ पर लाके खड़ा किया है यहाँ रफीक बाबा और नजीर टाइगर ने। नजीर टाइगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, रफीक बाबा स्ट्राइक लेने की तैयारी में। ये रही इस ओवर की पहली गेंद। उमर गाला ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से। इस बार स्टंप के काफी करीब से गेंद की थी, धकेला ऑफ साइड में कवर की और रन के लिए दौड़ पड़े। डायरेक्ट हिट की जरूरत थी पर गेंद स्टंप पर नहीं आई। वो दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, क्या वो तीसरे रन के लिए जाएंगे जहां केवल 1 रन मिलना चाहिए था। 3 रन मिले यहाँ टीम फ्रेंड्स 11 पारिमपोरा को। और जो इससे पहले यहाँ बातचीत कर रहे थे, एक सिंगल चाहिए यहाँ आने के लिए, किस्मत बहादुरों का साथ देती हैं। 3 रन मिले रफीक बाबा को, अब 6 चाहिए, हालांकि 7 चाहिए जीतने के लिए, 6 चाहिए बराबरी के लिए। 5 गेंदें बची हुई हैं। यहाँ से अगर मैच हारेगी तो हारने के लिए ये मैच होगा फ्रेंड्स 11 पारिमपोरा का। Exactly, they have to blame themselves, but this man Nazir, he has got opportunity. They just need 7 of 5 balls. Umagala second time gets ready, charges up a bit, crosses umpire and goes and bows.
That's in the air. Will this be taken? It looks like field underneath the ball. He holds on to the catch. Nazir goes. The big man caught in the net, and Umagala says him, "You may walk back." Sends him off, and what a standing ovation for Umagala. Their entire crowd is on their toes. So is our combox. What a delivery, and that will lift it up in the air, go straight down to the throat of back with Skalak fielder. Hold us on to the catch, and they are now 9 down at the score of 162, and Nazir is walking back to the pavilion, complete distract and distraught, disgusting. And there comes the great athlete of the valley, Yaqub Nath, walking into the middle. What an athlete! One has to remember and one has to praise this man. What a caliber, what a dedication this man possesses. He comes to the crease. Can he be the survivor? Can he be the lone survivor? Can he take his side home? Can he be the only anchor? He has to play the anchoring role at the fag end of the innings. There is Yaqub Nath for you. He's walking into the middle, but Umagala once again has proved his worth. Now he has picked up a fifth here, 5 for 13. What an exhibition all over, and what a spell he has been bowling. Hot out spell, and has picked up 5 wickets for just 13 runs. You can understand how he has been bowling. Exactly Asagawa, that has gone down to the wire, but heartfelt for front 11 Parimpora. 162 9 विकेटों के नुकसान पर याकूब नाथ वो स्ट्राइक पे हैं, लेकिन शायद पिच क्रॉस हुआ था। नए नियम अभी लागू नहीं हुए और मैनेजमेंट ने शायद लागू किए होंगे जो नए नियम बनाए गए हैं। अभी आईसीसी ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। उमर गाला गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और याकूब नाथ हैं स्ट्राइक पे। याकूब नाथ वन मैन और में, और जो मैं हमेशा कहता हूँ, और यहाँ जो व्यूवर बने हुए हैं जो नहीं जानते हैं याकूब साहब को, याकूब साहब एक बाजू है उनके पास, और ऐसे में वो चाहेंगे सिंगल लेकर वो छोड़ बदले। रफीक बाबा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। 162 हुआ टीम का स्कोर 9 विकेटों के नुकसान पर। नजीर टाइगर दोषी हैं और उन्होंने जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर सके। स्ट्रोक लेने की कोशिश की, स्ट्रोक को टाइम नहीं कर सके। एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा मिली, आईसीसी नहीं थी, 2 पर 6 थे तो बड़ा स्ट्रोक लगाना था। 5 गेंदें थी, 7 रन चाहिए थे जीतने के लिए। सिंगल डबल से वो जिता सकती थी टीम को, पर ऐसा उन्होंने किया नहीं। अगर मगर की खेल नहीं है क्रिकेट। उमर गाला की तारीफ करनी होगी। अब तक 5 सफलताएं अर्जित की। इमाद की जीत होगी तो उमर गाला मैन ऑफ द मैच होंगे। क्या लाजवाब गेंदबाज हैं उमर गाला। इस ओवर में अगली बार इस बार पैड लाइन पे रन के लिए दौड़ पड़े। रफीक बाबा स्ट्राइकिंग एंड की ओर जा रहे हैं और याकूब नाथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। लेग बाइज के रूप में 1 रन ही सही, हालांकि ये बल्ले के टो एंड से शायद गेंद लगी थी। अंपायर का कोई इशारा नहीं आया। याकूब नाथ के खाते में ये 1 रन जाएगा। इस 1 रन की बदौलत से 163 हुआ टीम का स्कोर। 9 विकेटों के नुकसान पर जीतने के लिए 6 रन चाहिए। 3 गेंदें बची हुई है। विश्वास में नजर आ रहे हैं रफीक बाबा, पर जो विश्वास है गेंदबाज उमर गाला का वो 7वें आसमान पर। जेके स्पोर्ट्स टाइम पर भी आप ये गहमा गहमी देख सकते हो, स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, आप जो हमेशा साथ देते हो, सहयोग देते हो। और जाहिद इकबाल का कहना है वेल बोल्ड उमर गाला, और हम तो ये कहेंगे कि ये जो ओवर किया है उमर गाला ने, उन्होंने अब तक का जो सफल था, शानदार बॉलिंग की उमर गाला ने। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इमाद टाइगर्स बैक फुट पर थी, किस तरह उन्होंने वापसी की। उमर गाला इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। रफीक बाबा को इस बार रफीक बाबा ने स्ट्रोक लिया बॉलर के सर के ऊपर से। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए 6 रन चाहिए थे जीतने के लिए और रफीक बाबा ने यह काम कर दिया। और मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि जो रफीक बाबा ने काम किया यहां अपने टीम के लिए, मैंने कहा कि वो विश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उमर गाला ने अब तक जो काम किया उस पे पानी फेर दिया और आप स्क्रीन पर देख सकते हो रफीक बाबा को बुलंद किया गया है हवा में और इसके वो दरकार हैं। नजीर टाइगर दोषी हैं और उन्होंने किस संकट में यहां टीम को धकेला था। याकूब नाथ की तारीफ करनी होगी, टीम के कप्तान हैं, उन्होंने सही समय पे एक अच्छी सिंगल लेकर वहां रफीक बाबा को स्ट्राइक दी और रफीक बाबा ने बाकी का काम पूरा किया। रफीक बाबा, और उनसे हम बात करने की कोशिश तो जरूर करेंगे। और रफीक बाबा आज के जो हीरो हैं
और रफीक बाबा ने ये जो छक्का जड़ा, उन्होंने काम किया अपनी टीम के लिए। 6 रन चाहिए थे जीतने के लिए। 18 गेंदों पर 27, फिर 12 गेंदों पर 24, 6 गेंदों पर 10 और फिर 3 गेंदों पर 6, और रफीक बाबा ने ये काम किया अपनी टीम के लिए। रफीक बाबा हमारे जो जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच है उस पर नजर आएंगे आपको, और उनके साथ बातचीत करने के लिए मुन्नवर तनवीर तैयार हो रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर आज के मैच के नायक, हीरो बने हैं, हीरो ऑफ द मैच मेरे साथ रफीक बाबा हैं, वादी कश्मीर का जाना पहचाना सनम। बाबा, क्या चल रहा था जहन में जब आपकी टीम का आखिरी सहारा भी छिन गया था, तब आपको मैच जिताना था, कैसा महसूस हो रहा? मैं इस जीत का खिताब याकूब भाई को देना चाहता हूँ, क्योंकि उसने लास्ट में सिंगल की, वो उसके लिए बहुत मायने रखा। मेरी इनिंग तब अच्छी हो गई जब उसने एक सिंगल दे दी मुझे स्ट्राइक पे रखा। रफीक बाबा, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंच से कि अभी बूढ़े नहीं हुए, अभी भी जवान है, 40 से प्लस है, अभी भी जवान है? राइट, नेवर गिव अप। इंसान लाइफ में कभी हार नहीं मानना चाहिए। हर हमेशा ऐसे अप्रोच के साथ और इंटरेस्ट के साथ खेलना चाहिए। हर कोई फील्ड में, क्रिकेट हो या कोई जॉब हो या पढ़ाई हो या कुछ भी हो, मगर इंटरेस्ट माने रखता है। और क्रिकेट के प्रति क्रिकेट फ्रेटर्निटी वैली को क्या पैगाम देंगे आज रफीक बाबा इस मैदान से, क्योंकि मैच के नायक बने हैं, और जिस तरह से आपने छक्का जड़ दिया, मुझे याद आ रहा है श्रीलंका के वो अरविंद डिसल्वा। दरअसल क्रिकेट की खूबी है, लास्ट में मैंने एक बॉल आ गई, वो अच्छा शॉट मारा हो तो मैच जीत लिए, वो सबसे बड़ी बात है। मगर क्रेडिट में देना चाहता हूँ याकूब भाई को। और आखिरी ओवर में मैंने पहले भी बात की, प्रेशर गेम था, प्रेशर आपके ऊपर था, कैसा प्रेशर था, कैसे नर्वस थी? मेरे 20-25 साल मेरी क्रिकेट में सर्विस है, मुझे तेंदुलकर से भी एक्सपीरियंस क्रिकेट की बहुत है। रफीक बाबा हमारे साथ नायक ऑफ द मैच, और इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स 11 पारिम्पोरा ने जीत दर्ज करके रमजान T20 कप को अपने नाम किया है। इसी सूचना के साथ मैं मुन्नवर तनवीर अपने सहयोगी नासिर भाई के साथ अब हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ जाएंगे, जहाँ पर अवार्ड्स आप तक पहुँचाएंगे।